गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम जो है गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। ओके, सो प्लीज ध्यान से क्लास को देखें। You know that internet can be used to do many tasks, but how do you use the internet? हाउ डू यू यूज, आप कैसे करेंगे इंटरनेट को यूज? To use internet, you need to connect to it first. You can connect to the internet in many ways. You can connect to the internet with a wire, without a wire, or through your mobile phone. Let's कैसे करोगे? वायर्स के थ्रू, केबल्स, वायर्स? take a look at each type of connection. When you connect to internet with a wire, it is called wired internet connection. वायर से कनेक्टेड होता है तो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस बोला जाता है। When you connect to internet without a wire, it is called wireless internet connection. And when you connect to internet with a mobile connection, it is called wireless mobile internet connection. हाँ जी, अगर हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो क्या बोला जाता है? वायरलेस मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। This mobile connection is made using a dongle which can be attached to your computer. इंटरनेट कनेक्शंस कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? Apart from your computer, there are three main components used to connect to the internet. These components are a modem, a data transfer medium, and an internet. कौन कौन से होते हैं हमारे कंपोनेंट्स? फर्स्ट, अ मॉडेम, ओके। सेकंड, अ डेटा ट्रांसफर मीडियम, एंड थर्ड, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आईएसपी। ओके, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। Internet Service Provider or ISP. The modem is a component that allows your computer to send data to the data transfer medium. जो हमारा मॉडेम होता है वो एक मीडियम है जो क्या होता है, डेटा को एक्सटर्नल, यानी कि मॉडेम कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही टाइप के जो डेटास है वो इंस्ट्रक्ट करता है। When the modem is inside your computer, it is called an internal modem. And when it is outside your computer, it is called an external modem. यानी कि टू टाइप्स के, अगर वो आपके कंप्यूटर के अंदर है तो वो इंटरनल है, एंड बाहर है तो वो एक्सटर्नल है। The speed of the modem is calculated in bits per second or BPS. इम्पोर्टेंट है, जो आपके मॉडेम के कैलकुलेट करने की स्पीड होती है वो किससे काउंट होती है? बिट से। The data transfer medium can be a telephone line, a dongle that receives mobile phone signals, or a wireless signal. Another important component of internet is the Internet Service Provider or ISP. The ISP is like your cable company and you need to pay the ISP to connect to the internet. This payment depends on the type of connection you want. आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। The ISP uses the data transfer medium to connect its modem to the modem of your computer. If you have paid, you can connect to the internet through the ISP. What would happen if you don't have an ISP? अगर आपके पास आईएसपी नहीं है तो क्या होगा? Correct. Your modem would not be able to connect to the modem of the ISP, and then you would not be able to use the internet.
You pay the ISP to connect to the internet. If you want to connect to the internet by using your mobile connection, you are using the क्या करोगे, wired, wireless या wireless mobile. If you want to connect to the internet by using radio waves, you are using wireless internet connection. The speed of the is called calculated in bit per second. किसकी होती है? modem. You can connect to internet by using a modem and a data transfer medium only. List the component required for a wired, a wireless and a wireless mobile internet connections. क्या है? The component required for a wired internet connections are modem, cable, ISP. The component required for a wireless internet connections are modem, wireless signal, ISP. The component required for a wireless mobile internet connection are modem, dongle, ISP. There are three main types of internet connections. कौन कौन से? wired, wireless, wireless, mobile. The main component of an internet connection are a modem, a data transfer medium and ISP. World Wide Web and Common Internet terms. You know what internet is and components are needed to connect to the internet. So let us talk about some common terms about the internet. The first term is the web browser. पढ़ा था हमने वेब ब्राउजर, हमने टर्म्स पढ़ी थी. सो फर्स्ट टर्म क्या है? वेब ब्राउजर. A web browser is an application on your computer. You use this application to show pages containing information. Examples of common web browsers are Microsoft Internet Explorer. कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, Google Chrome and Mozilla Firefox. Another term is the World Wide Web or WWW. This is another term for the internet and is also called web. The World Wide Web refers to internet as interlinked pages that contain information and can be opened by all users connected to the internet. When you open your web browser, you can see a page. This is called a web page. जब आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद जो पेज जो है वो अपीयर होता है उसको कहा जाता है वेब पेज. ओके. Everything on the internet is on individual web pages. These pages can have text, images, and even videos. A collection of web pages that are related to one type. इधर देखो, वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, अबाउट स्कूल, एडमिशंस, गैलरी, पीपल, डेवलपमेंट, पब्लिकेशन, इवेंट, कॉन्टेक्ट एंड होम. सो ये एक वेबसाइट है. वेबसाइट देखो कितने सारी चीज़ों से रिलेट होती है. Type of information is called a website. For example,
All the web pages about your school would make the website of your school. आप अपने स्कूल की वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपके स्कूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाएगी. Each website has a first page or an index page. This page is called a home page. जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ओके, सबकी अपनी अलग अलग एक पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है. ओके, जो फर्स्ट पेज होता है, जो इंडेक्स पेज होता है, उसको बोला जाता है होम पेज. This home page has links to other pages in the site. If you have a website of your home, what would you show on your home page? Correct. The home page introduces the website. Therefore, your home page would have basic information about your home, like your address and the people who live there. When you move your mouse on some parts of a web page, it changes from an arrow to a hand. What do you think this part of a web page is called? जब आप अपने माउस पॉइंटर को, मान लो हमने यहाँ रखा या यहाँ, तो हैंड शो हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? The part of the web page that changes the mouse pointer from an arrow to a hand is called a hyperlink. तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपरलिंक. मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जब हम पेज पर अपना पॉइंटर कहीं भी रखते हैं, सो उसका जब पॉइंटर चेंज हो जाता है किसमें? हैंड में. इट्स मीन वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं से. सो हाइपरलिंक का जो सिंबल होता है वो हैंड होता है. This hyperlink can be text or an image. When you click a hyperlink, it opens a different web page or a new window. Notice that as soon as you open a web page, some text is there in the address bar of the web browser. आप देख रहे हो यहाँ पे http://www.websitesname.com homepage.html. This text is called the web address इसको of the क्या कहा जाएगा? पेज का वेब एड्रेस. page. The web address is called the Uniform Resource Locator. बिल्कुल, जो आपका वेब एड्रेस होता है उसको URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है. Or URL. The URL is divided into 3 parts and each part is separated from the other by the / symbol. यानी कि जो आपका URL है वो कंपोज किया जा रहा है 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में. ओके, जिसमें स्लैश और जो आपके हैश होते हैं वो भी काउंट होते हैं. The first part is HTTP. This part states the web page uses the HTTP protocol. The second part of the URL is the domain on which the web page is present. This domain is also the web address of the website. The third part is the file or web page that is open. Sometimes, if the page is in a folder, the URL also has the path to the file. Now let us look at the different types of URLs. How many types of URLs do you think are available? कितने टाइप्स की होते हैं? There are 2 types of URLs.
Some URLs have numbers as their domain name and others have letters for their domain name. The URLs with just numbers as their domain name have 4 numbers separated by a dot. Each of these 4 numbers can range from 0 to 255. This number is called an IP address. This IP address is unique to each website. Using सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता है और उसको यूनिक आईपी एड्रेस कहा जाता है. Using an IP address as a domain name is called number or IP addressing. Some websites have letters as their domain names. These letters often end with a .in, a .org or a .com. यानी कि जो आपके जो सेकंड टाइप के जो सम वेबसाइट्स हैव लेटर एज देयर डोमेन नेम, तो लेटर्स होते जैसे .com हो गया, .gi हो गया, ठीक है. एंड पहले जो फर्स्ट को जो बताया गया था वो कैसे कोई फ़ोन नंबर हो सकता है, तो उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है, यानी कि एक आईपी यूनिक नंबर होता है. एंड सेकेंडली जैसे .com हो गया, .ca हो गया, ठीक है. Here, in is for websites in India. ORG is for websites of an organization. बिल्कुल, यानी कि अगर ORG है तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, CA है तो वो कनाडा की हो गया, ठीक है. एंड .com है तो वो इंडिया का हो गया. सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. And com is for regular websites. Using letters as the name of the domain is called Domain Name System or DNS. It is also called letter addressing. URLs with letter addressing are more popular than URLs with number or IP addressing. Can you think of a reason for this? URLs with letter addressing are more popular because the letters form words that are easier to remember than numbers. Which of the following is another term for the internet? World Wide Web. Which can be clicked to open another web page? Hyperlink. The collection of web pages that have one type of information are called websites. The dash is an application that shows text, image and video from the internet web browser. When you represent a domain name using letter is called Give an example of each of the following internet term. Web browser, Internet Explorer. Website, Microsoft.com. URL. एग्जाम्पल आपके सामने है. IP एड्रेस, इंडियन डोमेन नेम india.government.in. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट टर्म्स. ये आपकी टर्म्स हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स हैं. Web browser, World Wide Web, web page, website, home page, hyperlink, URL, number addressing and letter addressing. Okay. Web browser, an application on your computer that is used to show text, image and even videos from the internet. Web, worldwide, www, World Wide Web, a term that refers to the internet as interlinked page that contain information. Web page, a page containing information that open in the web browser.
Website, a collection of web pages that are related to one type of information. Home page, the first page or the index page of the website. Hyperlink, the text or image on which the mouse pointer changes from an arrow to a hand. The unique name of each web page. Number addressing using an IP address as a domain name. Letter addressing using letter as a domain name. So students, ये था आपका इंटरनेट. ओके, इंटरनेट के बारे में हमने कुछ ओवरव्यू थी जो हमने देखे. ठीक है, सो आपको ये पूरा चैप्टर जो वो अच्छे से याद रखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.